Hello viewers, welcome to my channel Pots and Plants. Today I will be talking about Hamelia plant. It is also known as a scarlet bush, firecracker bush and hummingbird bush. Hummingbirds are attracted towards its flowers. That's why it's given the name hummingbird bush. It is a perennial house plant and a shrub. It can be planted in pots and also used as a ground cover. It is commonly used in the gardens due to its ornamental, showy and bright flowers. It makes 4 to 5 feet high mound of tubular reddish orange flowers from early summer until fall. Its growth freezes in winter and it starts growing and blooming when temperature gets hot. It thrives in heat and needs 6 to 7 hours of direct sun for blooming. Its growth freezes in winter and it starts growing and blooming when temperature gets hot. It is a drought tolerant plant and thrives in any soil as long it is well drained. If you're planting it in a pot, then give it a pot with good drainage holes. Hamelia can grow in acidic as well as alkaline soil. Prepare a potting mix which is well draining. You can use 40% garden soil, 40% sand and 20% compost. However, if you are not using compost at the time of potting, you can use a slow release fertilizer like DAP granules every 2 to 3 months. As temperature cool in fall, firebush foliage turns to bronze or burning red. You can prune it in late winters to keep the plant in shape and promote its growth for next season. It enters into a semi-dormant resting phase in late fall. Its leaves turns to yellow and sometimes this plant shed all its leaves. Other notable members of this family include gardenia and ixora. Okay viewers, if you liked the video then share it and subscribe to my channel. Take care. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पॉट्स एंड प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। आज मैं आपसे हेमेलिया प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको स्कारलेट बुश भी कहते हैं, इसको फायर क्रैकर बुश भी कहा जाता है, इसको हमिंग बर्ड बुश भी कहते हैं क्योंकि जो हमिंग बर्ड्स हैं वो इसके फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। व्यूअर्स, इस प्लांट के जो खूबसूरत फीचर्स हैं उनमें एक तो इसकी फॉलिएज है जो कि ग्रीनिश ब्राउन्स कलर की है, और दूसरा इसके जो हैं ये खूबसूरत जो हैं इसके फ्लावर्स हैं जो ट्यूबुलर शक्ल में और जो है ये गुच्छों की शक्ल में, बंचेस की शक्ल में इसके ऊपर आते हैं। इस प्लांट को हीट बहुत पसंद है। अगर इसको 6 से 7 घंटे की फुल सन मिले तो ये बहुत अच्छा ब्लूम करता है। विंटर में इस प्लांट की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है और जब दोबारा से समर्स आती हैं तो ये दोबारा से ग्रो करने लगता है और उसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। हमेलिया के प्लांट जो है वो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों सॉइल्स में ग्रो कर लेते हैं। आप इसको सिर्फ एक ऐसा पॉटिंग मिक्स दीजिए जो कि लूज़ और वेल ड्रेनिंग हो। आप 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट से इसका जो है पॉटिंग मिक्स तैयार करें। इस प्लांट को भी अपनी ब्लूमिंग के लिए जो है फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। अगर आप पॉटिंग के टाइम के ऊपर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे तो आप ग्रोइंग सीज़न में एवरी 2 to 3 मंथ्स जो है आप इसमें DAP के कुछ दाने जो हैं वो इसके पॉट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो है ये तकरीबन जो है ये 12-14 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर आप 8 से 10 दाने DAP के डाल सकते हैं एवरी 2 to 3 मंथ्स। वो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते रहेंगे। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।